Pseudocode Learning Class 2. So this is our day 2. Okay? And today we'll try to learn one topic which is known as bubble sort. But to understand this topic, we need some prerequisites, some tools that are required to understand the concept of bubble sort. Bubble sort is basically a sorting algorithm. But before that, I just wanted to make sure that if you people know about the conditional loops. Conditional loops are of two types. Can you name them? Why then I can repeat it? Okay, the precondition loop is known as? The precondition loop is known as? While I'm lying, Yes, because the condition is checked beforehand. And the post-condition loop repeat until. is repeat until. Because the condition will repeat until it's checked at last. So this is your while loop. And there goes the condition. Condition is before. And then there goes the end while. Okay. So who can tell me about how they actually work? Okay, of course I have to give you a scenario for that. Until condition. So let's make a very simple scenario in which input numbers input a series of numbers. Input a series of numbers. A number -1 will end the input. Output total of all input numbers. Just to understand how conditional loop works, let's take an example of while loop first. Okay? Assalamu alaikum, man. Let's do this quickly. So I'm going to use a conditional loop. So input num while num is not equals to -1 जब तक while -1 input नहीं होगा, while till the num -1 will not be input, this loop will keep running. Which loop? While, and we're going to do what? We just need the total of all the values that has been entered. So total assigned to total plus num. Let's keep it this way. Okay. And we will going to input once again. Input num. Okay, I'm doing this. I'm just writing this input in all capitals. While in capital. Variables in a camel case, the first letter is like always capital. For example, what is camel case? For example, if I have a variable name, guys, I'm just giving you another idea. I'm going to complete this code, but just let me tell you what camel case is. If you have a variable number of items, so keeping every first word capital, keeping the character of every word capital, if you have more than one words in a variable name, that's known as camel case. So these all strategies will really going to help you out to score better in your examination.
All right. So input num, while num is less than is equal to minus one, total assigned total plus number, input num and end while. And here you can output, sorry, total. Am I missing something? People, am I missing something here? I think no, a declaration is not that important, but I think we need to initialize total. It's a must. All the counting, totaling, extreme values variables has to be initialized. Okay, so this is the solution of our very small problem, but in this problem, we are trying to understand how conditional loops work. Okay? Okay, so the pre-requirements of understanding the bubble sort. So we are just trying to understand some of the tools which will be required to understand bubble sort. So this is how while and while works. Okay, if I little bit comment on this while loop. If I run this program, yeah, this understanding is now super important. Whenever you wanted to understand any program, you must need to run that program on a piece of paper. To understand programming, you need to understand that programming on the paper first. This is the human, psychology. This is how it works. It understands when you use pen paper, even in this digital world. Okay, so let's do this pen paper thing. I'm going to initialize all the variables. I'm going to put down all the variables on paper like this. We have a variable named. Beta, can you tell me the number of variables used in this program? Name me the very first variable. Okay, num is a variable. Okay, we have another variable total. That's it. We have only two variables. Okay. So let's start running this code one line at a time to understand how the conditional loop works. Inside total, the value 0 is initialized. The second instruction, as soon as we run this instruction, what happens? It asks us for the input. Any number you wanted to input, Obed? Give me any number. 2. Okay. So the value 2 will be stored in this variable 2 because user will going to input 2 when this instruction will going to run. Okay. After taking input, let's move to this instruction. What this instruction will do, it will check. This is the condition. This whole thing is a condition. Okay. While loop runs when condition returns. While loop runs when the condition returns true or false. When while loops run, when the condition returns true, and while loop ends when condition returns false. Okay. The condition says that the loop will keep running until you input a value -1. So the condition will be checked. What is inside num? It's 2. 2 is not is equal to -1. This condition will returns true. Hence, we'll enter the loop, we'll do the total. Inside the total, now we know the totaling part, you already know it. Inside total, it's 0. Inside num, right now, 2, 0 plus 2, it will become 2. It will be updated to 2. And it will ask us for another input once again. Okay, Osman? And this time, give me any number.
Okay, what are the next tool to understand bubble sort is, which is really important, is how arrays work. Yes, we have done arrays already. Just help me out with this. Let's suppose if there is a small program. I'm using for loop because I'm going to use for loop in bubble sort. Just preparing you people for the next question. So I'm going to use this variable index for index 1 to 5. Okay? And we're going to run this program in a way I'm going to input, let's say, let's keep things simple, input num, and then I'm going to store these values into my ARR index and num, and next. So let's suppose we have an array. It's already been declared. My ARR with the size from starting index from 1 to 5. And it has a data type integer. यार देखो ये चीज सबको आनी चाहिए. Everybody look, if you have such problem, such question, some pseudocode already written, or maybe they have asked you to write the pseudocode, you yourself should know that you need to make an array, or you have to suppose an array. This is your copywork. This is not the thing that might have told you. They may not ask you to make it, but you have to do it by yourself. Madam, everybody is looking at here at the projector screen. बेटा क्या होगा कि let's suppose my ARR I think I have to make it short. This will going to work. But how many indexes? 5 indexes. So you must have this picture in your mind. Index number 1, index number 2, index number 3, index number 4, index number 5. You must know how this will going to populate the array. ये जब पूरा प्रोग्राम रन करोगे array को populate कैसे करेगा? So when this program start running, when this declaration will be done, we know that inside the RAM, this whole array will be created. When you start the for loop with an index variable, starting with the very first value 1, inside index, the value 1 will be stored. When this input command will run, the user will going to input some number. Maybe let's suppose he will going to input 26. Now this 26 will going to store where? What is inside index? At this moment for very first iteration, inside index it's 1. So this value 26 will be stored in my array first index, my array first index. So 26 will be stored here. Okay, next index will become 2. This is how the for loop works. From 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rounds. Okay. Second time, and again this instruction will going to run. It will going to ask for the input again. And let's suppose this time user inputs 45. Right now in index it's 2. So how this value will going to be stored? But what do we call this? The thing that I'm doing with the array. What does we call this? What I'm doing with the array right now? I'm indexing the values inside the array. So this value 45
will be stored in my array index 2. So my array index 2, the 45 value will be stored here. And this is how you can keep populating the whole array from 1 till 5. Get the point? Okay, array has been revised. The conditional loop has been revised. Let's quickly talk about how swapping works mathematically. Okay, if I give you a scenario, let me call this. We have understood arrays. We have understood conditional loops once again. Okay. And let's talk about swapping. Swapping. To understand bubble sort, we need to understand swapping as well. Okay, so if we have a variable A, and it has a value 10 inside, and then you have a variable B, and it has a value 15 inside. If I ask you to swap the values, of variable A and B, how you will going to do that mathematically? You can use one another variable to swap the values. Yes, sir. Okay, how you will going to use it? What the swapping means that after swapping, the variable A should hold the value 15 and the variable B should hold the value 10. So how you are going to do that? Okay, first you can hold or you can save any value in a temporary variable like this. So let's do swapping. Temp M equals to A. assigned to A, okay. A assigned. Now this A assigned to temp. Sir, B assigned to A. Okay. B assigned to The value inside 10 will be moved to the variable temp. Okay. Now B. A assigned to B. A, because you have saved the value A, now you can replace its value. A assigned to, B. so the value of B, B assigned to that. 15 will be moved into A. This will be updated. What will be the third instruction? B. B assigned. B assigned. Be assigned to temp. And the value that you have saved in the variable temp, that was 10, will be copied to B. So inside temp we have 10. It will be copied to B. So B will be updated to 10. Values has been swapped. Try to understand. We need to swap the values. Values can be anything. 10 and 15 are, for example, inside A, the value can be anything. Inside B, the value can be anything. Those values need to be swapped. The value of B should go in A and the value of A should go inside B. Values can be anything. So you need to make a generalized formula. So this is the generalized formula. Okay? Of course, you can always do something like that. यार इसका मुझे दूसरा तरीका जल्दी से बताओ. Team, tell me the another way of swapping. Temp, inside temp, what you can do? हाँ बिल्कुल ऑपोजिट कर दें. ठीक है ना? Just to further clarify the concept of swapping in your brains. So this is how swapping works. Ahmed, make sense? This one not me. Oh, sorry. Who was that? Hamza.
समझा? अच्छा हमजा, बेटा this is how swapping actually works, ठीक है? So now we know swapping, now we know arrays, now we know how conditional loops work, we already know how for next loop works. Well, let's have a quick recap of a concept of bubble sort. If I talk about bubble sort basically, what does sorting means actually here? First, if anybody can tell me about, I'm going to write the bubble sort again. Bubble sort. बेटा bubble sort, what is sorting? Sorting क्या होती है? They can ask these questions in paper as well. बेटा मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. What is sorting? What is sorting? Sorting of data. Certain order. Organizing the data in ascending और बेटा ascending और descending के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है क्या? नहीं होता ना, तो लिखना पड़ेगा ना बेटा. Organizing the data in ascending और descending order. Further, alphabetically और numerically. सही है बेटा? अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली. अच्छा सॉर्टिंग करनी है. सॉर्टिंग है बेटा, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास. एएस के अंदर हमारे पास बबल सॉर्ट है और ए2 के अंदर बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों है. ठीक है. व्हाट डज बबल सॉर्ट मीन? बबल सॉर्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यूज को स्वैप करना. ठीक है. ऑलराइट, लेट मी शो यू ए वीडियो ऑफ बबल सॉर्ट क्विकली एज पॉसिबल. आप लोगों ने पहले देखी होगी. This is a very good website to visually see a lot of algorithms. So today we're going to see a bubble sort algorithm. Let me take another set of data. This is good. देखा हुआ? Okay, but to use bubble sort, we need to swap the values, and we need to keep swapping the values in the array until the data is sort. So this is the strategy. Keep swapping the values in the array, comparing the current instruction with the next instruction. There are so many words I'm speaking right now. But look closely. Let's run this. We are swapping two values. Right now, here the index of an array starts from 0. Okay? But right now, if the index is 0, listen to me very carefully. If the index is 0, our current value will be this 42, and our next value will be considered as 35. So we're comparing the current value with the next value. Listen to me again very carefully. Now this is, I'm going to talk about bubble sort. We wanted to sort our data in an ascending order. It's an array of values. Some numbers are stored. The size of the array is from 0 to 9, and in bubble sort, we compare current value with the next value. In bubble sort, the bubble sort starts with this logic. If you want me to write it down, bubble sort. बेटा 5 marks है ना bubble sort लिखने के लिए आ जाता. An exam they ask you about the bubble sort and give the structured English answer in 5 marks. So it starts with the theory that in bubble sort, compare current value with the next value. So now what is this next and what is this current value? Okay? For example, here the index is 0. The current value will be this 42 and the next value will be 35. Everybody can see that? 42 and 35? Is it visible? Okay. So we're going to compare and check.
if we're sorting the data in ascending order, ठीक है? If data is being sorted in ascending order, okay, check if the current value is larger than the next value. ठीक है, क्या यहाँ पे करंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है? बेटा देखो, करंट वैल्यू इस वक्त हम जीरो पे खड़े हैं, स्टैंडिंग एट द इंडेक्स जीरो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज 1. So if your current value is standing at the zero at the moment, if your current value, which is 42 at the index 0, is larger than the next value, we'll do swapping, we'll perform swapping. Why? Because in ascending order, we want all the bigger values to move towards the right. Is that so? So when we're going to keep moving all the bigger values towards the right, this sorting start happening, okay? Look. Give me a second. Back, okay. Look. So because the current value is larger than the next value, the swapping happens. Okay? Again, then it will going to compare the current value with the next value. My bad. We are starting from here. But now the current value and the next value, because the current value is bigger than the next value, swapping happens. Now, after swapping, we move to the next index. Then we again check. Now look, this is the current value and this is the next value. Everybody can see that? Now 45 is larger than 45. Is 42 is larger than 45? No, swapping will not occur. We move forward. Now this is your current value. Does your current value is larger than the next value? Swap. Let's move forward. Does your current value is larger than the next value? Swap. Okay? And we're going to keep doing it from the lower index till the upper index. 45 larger than 9? Okay, swap. We have moved to index number 5 now. Let's check. Does your current value is larger than the next? Yes. Swap. Does your current value larger than the next? Yes. Does your current value larger than the next? Yes. Does your current? Yes. क्या swapping हो गई? We will going to do this swapping thing for this whole array again and again and again till we'll check that if none of the time swapping happens. Okay? Until the swap returns false, we'll keep swapping the whole data. This is the essence of the bubble sort. So if I'm going to put it down in my words, comparing current value with the next, if the data is being sorted in ascending order, if the current value is larger than the next value, swap. Okay? Check the whole set of data data can be better in an array can be one dimensional or two dimensions. Okay, check the whole set of the data from lower index till, or you can say lower bound till the upper bound. ठीक है बेटा?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा देखो लोअर बाउंड क्या होगा 0, यहाँ पे अपर बाउंड क्या होगा 9। बबल सॉर्ट जिन बच्चों को पता है वो ये कंफर्टेबली बता सकते हैं कि अपर बाउंड -1, ठीक है, दैट्स द रूल। कीप running the algorithm till swapping does not occur. It's mean data is sorted. ठीक है बेटा, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बबल सॉर्ट को जनरलाइज करते हैं। These are the some of the points which give you an explanation of how a bubble sort algorithm works. So let's suppose we have an array. And we have few numbers stored inside of it. Let's try to take the same numbers that we can find here. So we can correlate. Can you remember the words, the numbers? Ved 42, 35, 45. 42 तो करीब आगे बढ़ जाओ ना यार। 42, 35, 45, 939, 939, 9, 23, 6, 40, 23, 6 and 40, and then 6 again. So how many indexes? We have, we're going to start index from 1, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The question is, perform bubble sort on given array by ARR to sort the numbers in ascending order. Do remember that 23. So let's start writing the solution for this problem. How to start writing bubble sort. This is, the whole thing. This is the whole strategy that we need to apply. So that's brilliant. The data is sorted. That's cool. Can you do this in ascending order? Can you perform bubble sort in 2D array? Can you do this insertion sort as well? Can you do the same? Can you perform insertion sort in the same myARR as well? यार हमारा असल में बच्चा शायद थोड़ा एडवांस है, उसको एक्स्ट्रा टास्क दे रहा हूँ। बेटा अगर आपको बबल सॉर्ट लिखना है, आपको इस myARR को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, आप इसको लिखना कैसे शुरू करोगे? सबसे पहला प्रॉब्लम यही शुरू होता है ना। Look, whenever you will going to start writing bubble sort, if you have to write it all by yourself, there are three different type of solutions to perform bubble sort. They're like almost identical. There are few changes. The main core of the bubble sort remains same. But when you need to start writing bubble sort, what is the very first thing that comes to your mind? What's that? लिखना कैसे शुरू करोगे?
Okay, declaration. I'm going to leave some lines for declaration. Declaration is not that essential. जब हम variable use कर लेंगे तो declare कर लेंगे यार. अब बताओ कैसे शुरू करेंगे? Sir, I can jump at some. Let me just jot it down this way in bubble sort. याद रखिएगा मैं दोबारा लिख के भी बता दूंगा. We have to perform swapping. So we need to swap. To swap, we need to put a condition using if. Then we have to perform that swapping from the lower bound till the upper bound. For that, we need a loop. Probably you can use for next loop. Now that is an inner loop. Okay? And we need to keep swapping until the data is sorted. So we need another loop. That can be a conditional loop. So a conditional loop, an inner loop, and then the if condition and swapping. So this is how you can recall your bubble sort. Let's start doing it. So you need a conditional loop. While, I'm going to use while, you can use repeat until. And sometimes you can also use for, that is a non-efficient bubble sort algorithm. While swap is equals to true. The condition is, if swap is true, this loop, when till swap keep returning true, we'll keep running the program again and again. Okay? So while swap is equal to true, the outer loop for the inner loop, and we're going to run this loop from the lower bound till the upper bound minus 1. What is upper bound? What is upper bound and lower bound? The indexes of array. The lower bound of this array is 1. Okay? The index of this array is starting from 1. भाई IT नहीं attention नहीं लेनी, ठीक है? Okay. So starting with 1 and ending at 10. The upper index is 10. All right. Let's make a variable. Let's call it max. Because in bubble sort we're going to use this variable more often. Let's initialize this variable max with 10. Whatever the size of the array will be given to you, whatever will be the upper bound, an array of size 100, you can give 100 to max. An array with an upper bound 1000, you can give 1000 to max. And then you do this here. Max minus 1. That's the rule. Rule of thumb. जो inner loop होगा, for next होगा, वो हमेशा एक कम चलेगा. ठीक है? How to rectify bubble sort? Okay, for x 1 to max. And inside this inner loop, you use this if condition. If the current value. What is the name of the array? What is the name of the array? My ARR. My ARR. So the current index x. इनपुट नहीं रहा था पहले से। नहीं बेटा, बबल सॉर्ट में इनपुट क्यों लेंगे? हमारे पास एक एरे ऑलरेडी मौजूद है ना, उसको हमने सॉर्ट करना है बस, दैट्स इट। इस एरे के जो जितने भी तुम्हारे नंबर्स हैं उनको सीधा करना है सेंडिंग ऑर्डर में, छोटे वाले इधर, बड़े वाले उधर, दैट्स इट। अब वो आगे की कहानी है कि आप फंक्शन बनाएं बबल सॉर्ट का, प्रोसीजर बनाएं, हम उस लेवल के ऊपर आएंगे ना इंशाल्लाह। अभी तुम बबल सॉर्ट को समझ रहे हैं, उसकी कोर को समझ रहे हैं। सही है, बबल सॉर्ट फिर 1D एरे पे लगाएं, 2D एरे पे लगाएं, फिर बबल सॉर्ट के 2-3 तरीके हैं वो इस्तेमाल करें। अभी हम बिल्कुल जो जनरलाइज पिक्चर परफेक्ट हमारा बबल सॉर्ट है वो समझ रहे हैं। बेटा माई ARR द नेम ऑफ द एरे, क्योंकि हम इसको सॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं, वी आर सॉर्टिंग दिस पर्टिकुलर एरे and we use the indexing variable x. Why we have used x? Because we are using x here in for loop. So my ARR x, if the current value is greater than the next value. Beta, how we going to write down the next value? इसको next में कैसे बनाऊंगा? अगर x में 1 है तो आगे मैं इसको 2 कैसे बनाऊंगा? So x plus 1. X plus 1. This x plus 1 will be known as the next value. बेटा ये चीज आपको पता होनी चाहिए. This means current value. This means next value. This is how you remember bubble sort. ठीक है? इसको घर जाके 2 दफा दोबारा लिखना आप लोग.
if this comparison happens, if your current value is larger than the next value, you do what? You do swap. बेटा swapping के लिए क्या करोगे? temp current value इसके अंदर move कर दोगे. My ARR X, and then because you have saved your current value, my ARR X, my ARR बताओ भाई, X plus 1, and then my ARR X plus 1 equals to temp. मैंने कुछ नया नहीं किया बेटा, एरे को यूज किया मैंने, ये स्वैपिंग वाला मेथड यूज किया आपका, ये वाला सही है ना, इसको रिलेट कर लेना. ओके, बिकॉज स्वैपिंग हैपेंड, स्वैप इज ट्रू एंड इफ मैक्स माइनस 1, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंट बबल शॉट. एफिशिएंट बबल शॉट, इसको हम बाद में कमेंट करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर हम कमेंट बाद में करेंगे. मैक्स माइनस 1. नेक्स्ट, एंड वाइल. अच्छा सॉरी, ये वाला पार्ट ना हम यहां नहीं लिखेंगे, ये यहां पे लिखेंगे. चलो अच्छा हुआ मैंने मिस्टेक कर दी, इसको हम बाद में कर लेंगे. इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, इसके ऊपर हम कमेंट्स ही बाद में कर लेंगे. नेक्स्ट, and while. The last but not the least, I have left this line intentionally. Whenever you start the loop again, the inner loop again, you always have to set swap is equal to false, hoping that this time swapping does not happen. Set swap to false. But even if this condition returns true, and even if once the swapping happens, we have to go around and then set the swap false again and check the whole array once again. Okay? बेटा स्वैप को फॉल्स करके शुरू करेंगे. अब स्वैप को आपको यहाँ पे ट्रू भी करना पड़ेगा ताकि आपका लूप सबसे पहले चलना तो शुरू हो. स्वैप असाइन टू ट्रू, while swap is equal to true, then you start your bubble sort. अच्छा, sometime there is a variable used no swap. अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि swap की जगह मैं no swap variable use करूंगा, no swap is equal to false, while no swap is equal to false, swap assigned to true, and then no swap assigned to true and no swap assigned to false. You can simply change the values another way around. It will still going to work perfectly fine. But this मैक्स इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट देखा था फाइल लूप के अंदर. बेटा मैं यहाँ इस जगह लिख देता हूँ. ऊपर से सर आपको लाइक वाइल के साथ उसकी वो भी तो करना पड़ेगा ना, लाइक स्वैप इज इक्वल टू ट्रू एंड मैक्स इज इक्वल टू 10. तो इस जगह पे मैक्स इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ. यस आई एम. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हर बबल सॉर्ट के हर पास में आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो ऑर्डर में आ जाती है, आप असाइनिंग करना चाह रहे हैं, डिसाइडिंग करना चाह रहे हैं. बिल्कुल. अगर आपके सारा ऑर्डर जिस तरह भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो असेंडिंग करना चाहते हैं, सारा असेंडिंग हो गया. अब हमने अगर उसको पास दोबारा नहीं करना तो उसके लिए आपने प्रूफ लगाया अगर हमारा सारा खत्म हो. तो वो कहना चाह रहे हो कि एज फार एज आई अंडरस्टूड कि जब आप एक दफा बबल सॉर्ट करते हो, पहली दफा बबल सॉर्ट करते हो, जब पहली दफा तुम्हारा पूरा एक लूप चलेगा इनर, पूरा जो फॉर नेक्स्ट चलेगा, तो उससे क्या होगा कि सबसे, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ,
तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू लास्ट में चली जाएगी, ये कहना चाह रहे हो ना? जी सर, लेकिन अगर हमने के पास काफी दफा चलता है ना, क्योंकि हमने वाइल लूप लगाई हुई है ऊपर। हाँ, लेकिन लाइक वाइल लूप में सिर्फ आपने एक कंडीशन लगाई है कि जब स्वैप ट्रू होगा, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज लाइक वो सारा लाइक खत्म हो जाए, लाइक वैल्यूज लाइक ओवरऑल एक 8 दफा अगर पास होता है, 8 दफा हमारा पास हुआ, लाइक लास्ट टाइम तक हमारी सारी वैल्यूज खत्म होगी, तो ऊपर ये भी कंडीशन नहीं आएगी कि लाइक मैक्स इज इक्वल लाइक स्वैप इज इक्वल टू 2 के साथ के लाइक मैक्स वाला जो वैल्यू है वो -1, लाइक लास्ट वैल्यू से पहले पहले तक खत्म हो जाए मैच। नहीं नहीं, देखो वो मैं तुम्हारी बात समझ गया। असल में जो तुम बात कह रहे हो ना, वो एफिशिएंट बबल सॉर्ट, ये जो मैंने मैक्स इज इक्वल टू मैक्स असाइन टू मैक्स -1 नेक्स्ट के बाद लिखा है और एंड वाइल से पहले लिखा है। और तुम अगर नोट करोगे तो यहाँ इस जगह पे मैंने फॉर x 1 टू मैक्स -1 लिखा हुआ है। तो इससे होगा ये कि जब आप एक दफा पूरा फॉर नेक्स्ट चला चुके होगे ना, फॉर एग्जांपल जब हमारे मैक्स में 10 है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर का लूप चलेगा 1 से लेके 9 तक चलेगा, क्योंकि हमने इसको मैक्स -1 भी किया हुआ। उसके बाद ये क्या करेगा कि मैक्स को और कम कर देगा। मतलब मैक्स अगर यहाँ पे 10 है और इस वक्त ये 9 है, तो अगली दफा तुम्हारा लूप जो है, जब ये 9 हो जाएगा, तो अगली दफा तुम्हारा लूप जब दोबारा फॉर नेक्स्ट चलेगा तो 8 टाइम चलेगा, फिर दोबारा जब फॉर नेक्स्ट चलेगा तो फिर 7 टाइम चलेगा, फिर दोबारा जब फॉर नेक्स्ट चलेगा तो 6 टाइम चलेगा। क्यों? अब तुमने क्वेश्चन कर लिया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे विजिबली देख सकते हैं कि अहमद, अगर मैं सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, देखो ये पहला फॉर नेक्स्ट चल रहा है, पहली दफा मैं 0 से 8 तक जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा, मैं यहाँ तक गया, डेटा मेरा सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं देख सकता हूं कि मेरी सबसे बड़ी वाली वैल्यू लास्ट में जा चुकी है। तो अगर मैं इसको लूप को यहां से लेके यहां तक रन करके इस लास्ट वैल्यू को यहां तक ले आया हूं, तो अगली दफा मैं लूप को यहां से लेके यहां तक रन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे बड़ी वाली वैल्यू तो पहले ही सॉर्ट हो चुकी है। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि आपके पास जो है नंबर ऑफ आइटरेशंस कम हो जाए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वही काम कम टाइम में हो जाए। तो तुम देखोगे, ये देखो हमने इसको सॉलिड कर दिया। अब हमने अगली दफा जब लूप चलाना है, तो अब हम लास्ट वाली वैल्यू को चेक नहीं करेंगे, अब दूसरी बड़ी वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लास्ट में आ चुकी होगी। सो इट्स बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द टाइम बबल सॉर्ट चलाते हुए कि भाई इस तरह से जब भी कभी एक दफा पूरा फॉर नेक्स्ट चलता है, पूरा इनर लूप चलता है, ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू को वो राइट मोस्ट पे, या अगर हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को राइट मोस्ट में स्टोर कर चुका होता है। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, एक एक लूप कम करते चले जाते हैं। That's what you're asking for, I think, है ना सर? यस सर। तो इट्स बीन ऑब्जर्व, इसको तुम विजुअल एल्गो में तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर लूंगा, तुम उसको यहाँ से रिलेट करके देख सकते हो। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो बेटा बबल सॉर्ट को अब आपको इसको ना पूरी तरह से डिकोड करना है। तो पता है किस तरह से करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जो काम मैं अक्सर आपसे करवाया करता हूँ। बेटा आप लोग ये करोगे कि आप अपने पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको पहले लिख लोगे। आपके पास स्वैप वेरिएबल है, ठीक है, आपके पास टेम्प वेरिएबल है, आपके पास एक्स जो फॉर का वेरिएबल है वो भी मौजूद है, फिर आपके पास जो है वो करंट वैल्यू माई ARR एक्स, उसको इस तरह से अलग से लिख लोगे पहले, माई ARR एक्स, इसका एक बॉक्स बना लोगे। फिर माई ARR एक्स प्लस 1, इसका भी बॉक्स बनाओगे। फिर बेटा इस पूरे प्रोग्राम को खुद ट्रेस करोगे। शाफ अबैद, मैं बेटा देख रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पे सुन लो पहले, इसको जल्दी से ना एक क्विक गो में बता रहा हूँ आपको। चलो मैक्स भी हमारे पास एक वेरिएबल है, इसको भी हम बना लेते हैं। मेरा तो नहीं गया बेटा, प्रोग्राम चलाना शुरू करोगे, स्वैप में यहाँ पे तुम लिखोगे इस तरह से ट्रू। अभी तुम क्या कर रहे हो बेटा, ऑन कॉपी कर रहे हो, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करके देख रहे हो मैक्स में 10। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट तुम खुद पे करोगे ना, ये जो काम बेटा अवैध घर पे किसी भी इस तरह के सूडोकोड को खुद बॉक्स बना के वैल्यूज को मूव करके करोगे, that's the biggest investment in 21st century that you can do on yourself to understand the logic of how the programs work। ठीक है बेटा, while swap is equal to true,
क्या स्वैप के अंदर ट्रू है? यस, इस वक्त है, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे हम स्वैप को क्या कर देंगे? ट्रू से फॉल्स कर देंगे। पहले एक पेंसिल यूज कर लेना हल्की वाली, ताकि मिटा मिटा के अपडेट कर सको, या कट करके कर लेना। बेटा फॉर एक्स के अंदर तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, सही है। इफ चेक करेगा, बेटा देखो यहाँ इस वक्त एक्स के अंदर 1 है, इस वक्त तुम्हारे पास x1 के अंदर 42 है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे 42 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ग्रेटर देन के साइन के बाद माई ARR x+1, तो x+1 यानी कि 235, यानी कि x+1 1+1 यानी कि PyR2 के अंदर 32 है। तो ये 45 को 32 के साथ कंपेयर कर रहा है। क्या 42 32 से बड़ा है? यस, बड़ा है। फिर 10 के अंदर तुम किसको लेके जाओगे? 42 को, ठीक है। फिर 32 को कहां पे लेके जा रहे हो? सॉरी, ये तो यहीं पे लिखा रहेगा, पहले तुम इसको रिप्लेस करोगे 32 को, ठीक है। फिर 10 की वैल्यू 42 यहां पे लिख दोगे, फिर स्वैप को कर दोगे ट्रू, ठीक है। अच्छा, एक चीज कीजिएगा, जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, जब वैल्यू स्वैप हो जाए तो यहां पर भी कर देना, इस जगह पर भी कर देना। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास आ गया 35 और अब आ गया 42, ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगली कंडीशन लगाओ ना, तो तुम इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करो। तो बेटा इस तरह से फिर ऊपर जाओगे दोबारा, नेक्स्ट x तुम्हारा 2 हो जाएगा। फिर अब जब तुम उठाओगे तो x माई ARR2 से तुम्हें अब माई ARR2 से 42 मिलेगा, 42 लिखोगे, ठीक है। 45 तुम लिखोगे माई ARR x+1 के अंदर। एक एक वैल्यू को इस तरह से रन करके प्रोग्राम्स को चलाना सीखो, मे भी आधा घंटा लग जाए। दैट्स how you can understand programming, and this is the best investment that you can do on yourself. ठीक है, एक्नॉलेज्ड। बेटा मैं बबल सॉर्ट को रैप अप कर रहा हूँ।